अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आए हैं एंड वी आर गोना कुक सीख कबाब. These recipes are mainly for Eid al-Adha foods which are gonna be cooked when when the goat is gonna be sacrificed. Alright, so first off we will start with the meat. Over here we have taken 300 grams of minced meat and 100 grams of fat. These are the ingredients you can see over here. So now let me tell you. This is half teaspoon chili paste, 1 teaspoon ginger paste, sabit garlic. We have just chopped it. We are gonna add it into the mince. This is more than 2 tablespoons, around how much ever you feel which is enough. We have finely chopped it. Coriander. This is a small onion which we have also diced and chopped properly. Over here we have the spices. This is red chili powder. We have taken a half teaspoon. Salt, half teaspoon. Haldi powder, the turmeric powder, half teaspoon. Garam masala, 1/4 teaspoon. Zeera powder, which is the cumin powder, 2 tablespoons. Seekh Kebab masala, which is easily available at the market. This is 1 tablespoon, and then red chili flakes. This is half tablespoon. And then this is the ground flour, which we also called as basin. This we are gonna add when we are gonna shape the Seekh Kebab into a long shape, and we're gonna make the Seekh Kebab firm by adding this. So now let's get started with our procedure. So the procedure of this is very simple and easy to make. We are gonna add some of the ingredients, and then we're gonna chop it more into the grinder, and then we're gonna add the rest of them. So here we're gonna add chili, ginger, the garlic. This we have taken 8 to 10 cloves. Coriander. Next off we have onion. Now we're gonna mix this and then grind it in the chopper. As you can see, हमने इसको चॉपराइज कर दिया. अब हम इसमें डालेंगे ग्राम फ्लावर, which is the basin. We'll add 2 tablespoons. We can add more according to the situation. Next off we will add the spices: salt, red chili powder, crushed flakes, Seekh Kebab masala, cumin, garam masala, and haldi. Now we're gonna mix this. इसको इस तरह हम बनाएंगे, ठीक है. ये देखें कैसे स्ट्रिक्ट में ये बना लिया. अब इसको हम फ्राई पैन में इसको हल्की आंच पे इसको फ्राई कर देंगे तो बेहतरीन से बन जाएंगे स्ट्रिक्ट में, ठीक है. और ये देख सकते हैं बेहतरीन सी, देखें सीख कबाब फ्राई हो रही है. और अक्सर लोग जो है ना उसको अगर कोयले में बनाना चाहें कोयले में बना सकते हैं गिटी के अंदर, लेकिन इसको घर के अंदर भी बना सकते हैं. और उसके बाद अगर कोयले की जो है ना आप वो देंगे ना, इसको दम दे देंगे या इसका स्मोक दे देंगे कोयले का जलाकर, तो उससे बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट आएगा जो कि कोयले पे जैसी कबाब बनती है. और ये जनाब बहुत ही बेहतरीन सी सीख कबाब रेडी हो चुकी है. आप देख सकते हैं
कितना खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही बेहतरीन सी बनी हुई है। और जो इसकी जो बनावट है वो भी बड़ी बेहतरीन सी बनी हुई है। और इसकी आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन आ गया है। और ये जो मिक्सचर जो बनाया था वो बहुत ही टेस्टी था। और अब हम जो है ना जो इसको सर्व करेंगे ना वो इससे एक रायते के साथ, पराठे के साथ हम खा सकते हैं पराठे। और उसके साथ साथ जो है ना ये इमली वाली चटनी है ना, ये मीठी और जो खट्टी है, ये हम इसके साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जायका आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ट्राई करें और इसको एंजॉय करेंगे ज़रूर हमारी इस रेसिपी को।